Okay. So I'll start with the question, which is little analytical in nature. You have to think and tell that how should government plan health services or make policies for health? Should it be long term or short term? Like we did it in 5 year plans. We uh, removed 5 year plans and started making plans for every year. So how should we do it in health? Yes, Uh, should have a question. You don't have to uh, verify the current practice of government. I think we should practice 1 year short-term plans, because in short-term plans, as our in our health environment, the priorities change from time to time. The targets change and the diseases rise. There are many diseases which came into rise, and the diseases which are declining, such as if I take example of my own state Delhi, तो डेंगू के केसेस पहले from 2015 to 2019 were declining, and now from 2019 it has started rising till now. So we have to make now focus on the dengue. So if we make the 5 year plan in the start of the 2019, so हम डेंगू पे इतने अच्छे से focus नहीं कर पाते. So it will help uh, all through all area to target better and to get better results. Will you add a little more? Like, what are the aspects where we need to have long-term plans, and what are the aspects where we need to have short-term plans? So, say disease and annual schemes के अंदर we should have short term plans, and like building uh, infrastructure or having a view of opening how much we have to invest. In that case we can have a long term vision. चलो इस पे सोचना तो ठीक है. ठीक है. Tell me that how, मतलब, have you read the policies of Delhi government for health? हाँ, yes sir. So what are the key distinguishing factors that you can identify that Delhi government is doing good in terms of providing its healthcare services? So there is a scheme I can mention a scheme na. So Yes, medicines. हाँ, the Delhi's provide मतलब financial assistance is provided by the central government to all over the country, but the Delhi is providing his own assistance like a Delhi Arogya Kosh, in which people are provided financial assistance for their minor surgery, and the people who are the resident of Delhi and they are not earning that good, so government provide them the financial assistance for their surgeries and other minor diseases which need to be which people can't afford. And also uh, Maulana Azad college has started the mobile dental clinics, so that has been also the achievement in our Delhi area. And also uh, government has initiated the एक health management information system भी initiate करा है, एक web portal जिसपे we have stored मतलब all the मतलब we have informed all the nearby hospitals and everyone to start reporting to that with health records and everything, जहाँ पे हम एक ही जगह दिल्ली का डाटा combine कर रहे हैं और we have making मतलब better outcome. So you did not talk about Mohalla clinic or So government where Mohalla clinic is there, and uh, there are around 521 Mohalla clinics in Delhi, which is वो primary level पे they are providing healthcare better. जो people in our slums who the old people who cannot travel, and so उनके society में classes. Mohalla clinic is not for slums only. It for is for all all the
area has हाँ, Mohalla clinic हुँ, and everyone is invited for Mohalla clinic. हुँ, ऐसा नहीं है कि स्लम्स हुँ, के लिए है या गरीब लोगों के लिए है। हुँ, तो इसके एडवांटेज ये बताने हैं कि मोहल्ला क्लिनिक की इफेक्टिवली ऑपरेट होने से जो हुँ, हॉस्पिटल्स है, जो सेकेंडरी हुँ, हॉस्पिटल्स है, उस पर बर्डन कम हो गया। हाँ, सर वो ये समझ चीज गया। मुझे हाँ, बता रहे हैं, हुँ, वैक्सीनेशन के लिए, प्राइमरी चेकअप के लिए, हुँ, क्विक हुँ, जैसे सीजनल बीमारी के लिए हुँ, यहाँ लोग रिलाई करते थे हुँ, हॉस्पिटल्स पे। नाउ दे आर हुँ, गोइंग मोहल्ला क्लिनिक्स एंड हुँ, saving their resources also. At the same हुँ, time, government is able to focus on हुँ, हुँ, सेकेंडरी हॉस्पिटल। ऐसा है, तुमको बोलना है, ठीक है। तो दूसरा बताओ कि यू हैव अप्लाइड बोथ एमएचए एंड पब्लिक हेल्थ, सो टेल मी व्हाई पब्लिक हेल्थ। uh, uh, I have put MH at my first and नो, MPH. हाँ, मैं ये पहले सोच रहा था पूछने के लिए। आई जस्ट हाँ, रिमेम्बर्ड आई हैव हुँ, आस्क्ड दिस क्वेश्चन बिफोर आल्सो। हुँ, नाउ द क्वेश्चन इज जस्ट व्हाई डू यू वांट टू परस्यू अ डिग्री इन पब्लिक हेल्थ। हुँ, uh, while in my while I was having one-on-one interaction in the OPD with the patient, so I noticed that people are traveling far from their home to get the services because of the nearby primary healthcare centers are not providing the uh, basic care which they need, like they are not getting the essential medicine, and there's lack of medical staff, and they are facing a lot of problems, and even they are not aware of the what services are available nearby their services, so they are traveling all the way to the urban areas for the treatment. So in this I noticed the holistic approach for the primary public health is missing. So we need to I think we need to look into that, and it definitely needs some improvement. And also through this course I'll able to learn about the challenges in the public health which is happening, and also and what changes we can, what improvements and strategies we can make to improve the public health outcomes. So uh, and also about how the sorry. कैसे मिस हो जा रहा है, मतलब यू जैसे तुमने बताया कि जैसे आई हैव सीन पीपल फ्रॉम रूरल एरिया Hmm, where the health services are not accessible, hmm, and a lot of other instances where I realize that public health infrastructure is not sufficient to serve the people need. And इसी पे तो बात हो रही थी ना, जनरलाइज कर देना इसको। hmm. and and we need more and more professionals there. So I got interested in that. So the thing is So that you I have want to contribute that in a meaningful way. Yes. मीनिंगफुल वे, देखो कंट्रीब्यूट इन मीनिंगफुल वे बड़ा क्रिंज सा लाइन हो गया। Hmm, यू वांट टू मेक योर कैरियर इन दिस एरिया hmm, वेयर यू कैन वर्क फॉर मतलब लाइक लोकल टू द नेशनल लेवल, है hmm, ना, स्टार्ट करके। और टू डू दैट यू हैव टू स्टडी द entire public health infrastructure in detail, hmm, and the knowledge that the program gives, that what are the structure of public health machinery, how they are getting money, or what resources they are spending, what are the other peripheral work with health is there, and also how it is being administered and how it is being planned and executed। तो ऐसे करके बताना है थोड़ा और, इस पे काम करना पड़ेगा तुम्हें। वाई दिस कोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक सो वो है। बोलने में तो मतलब ये जो आप बोल रहे हो ऐसे ही, मतलब यही वाला साउंड सही कर रहा है, लेकिन लिखने में वो बस अच्छा लग रहा था वो वाला हाँ, तो वही राइटिंग ये में। भी मैं बोलना चाह रहा था, जरूरी हाँ, नहीं है जो तुमने लिखा है हाँ, वही बोलो, उसको रिवर्ड रिफ्रेश कर सकते हो। हम्म, ठीक है, मतलब एक बोलना चाहिए ना कि ये दिखना चाहिए कि यहाँ पे जो मतलब जो तुम्हारी एक्सपोजर है, हम्म, दैट इज इनफ टू अंडरस्टैंड द पेन ऑफ द सब्जेक्ट, है ना। ठीक। एंड हम्म, देन यू ऑल्सो नो द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सब्जेक्ट,
And then you also know that you'll be doing that subject, you will like it, you are interested in that, and you will be making a good career out of it. तो ये तीन चीजें तुम्हें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। हम्म, थोड़ा वर्ड्स अच्छे आने चाहिए, और कॉम्प्लेक्सिटी पता नहीं रहेगा तो कैसे काम चलेगा। पब्लिक हाँ, हेल्थ इज टू बिग डोमेन, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी। इसीलिए तुम बीच बीच में देखते रहा करो ना, जॉन हॉपकिंस वगैरह यूनिवर्सिटीज वगैरह के जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट्स हैं उसके हम्म, भी इंटरव्यूज वगैरह, डॉक्टर जो प्रोफेसर हैं हम्म, उनके लेक्चर्स वगैरह देखते रहा करो, ठीक है। हाँ, ठीक है। अभी एक और बात बताओ मुझे कि तुमने होम्योपैथी पढ़ा है, हम्म, एंड यस सर। what are the things that you have already studied in your homeopathy, which are going to help you in public health domain? For this course, I think it is very important to have the knowledge of this field. And in my homeopathic course, I have gained the medical knowledge about the all the basic clinical knowledge I have gained. So I think I have the potential to understand the medical data and uh, the records and the diagnostics. Uh, uh, and also it will help me to understand what healthcare how what challenges are faced as a healthcare provider. And also being a doctor, uh, it developed me a ability to be a good listener, so I can also um, listen to the patient needs more. नहीं नहीं नहीं, मैंने सिर्फ पढ़ने की बात की थी कि क्या तुमने Mm, ऐसा पढ़ा। mm, तो ठीक है, तुमने हेल्थ के बारे में पढ़ा, mm, हेल्थ के डिफरेंट mm, कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा, mm, mm, एंड probably you also must have compared with different health system। mm. Yes पढ़ाते सर। ही नहीं होम्योपैथी हाँ में सर। कि डिफरेंट कंपेयर। कंपेयर तो हाँ। कराते हो। तो हम्म, अब जैसे पब्लिक हेल्थ में आयुष है तो वहां पे तुम्हारी ये नॉलेज काम आ सकती है, तो ऐसे रिलेट हम्म, करना हाँ सर, वो कंपेयर और वेयर है। आर द लिमिटेशंस आयुष इज हैविंग एंड हाँ, व्हाट वी ये कैन सब नहीं कि how we can implement it in a mainstream. ठीक है। Yes. रिच आंसर तुम्हारे अभी नहीं है, रिच होने चाहिए थोड़ा, और Yes. रिच ज्यादा से ज्यादा सोचना पड़ेगा, तुरंत निकालना पड़ेगा क्या पढ़ा क्या चीज हाँ। होती। प्रेजेंस ऑफ माइंड भी थोड़ा बढ़ाओ, और डरो मत, डरने से कोई फायदा नहीं होता। मतलब आई नो दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव योर, मतलब क्या बोलते हैं, डर, फियर एंड एंजाइटी, बट वो दैट हेल्प्स। दलाई लामा की बात कि अगर आपके पास सॉल्यूशन है तब भी चिंता हम्म, करने की जरूरत नहीं है, सॉल्यूशन हम्म, कीजिए। और आपके पास सॉल्यूशन नहीं है तब भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, अल्टीमेटली यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंस। yes sir. तो उन्होंने बोला कि चिंता जो है वो बेमतलब की चीज है, ठीक है। तो डोंट वरी, आप आपके पास सॉल्यूशन ये है कि आप अच्छा सोचो, प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करो, हाँ, ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करो। दिस इज व्हाट यू कैन डू, है ना। यहाँ पे भी चिंता नहीं करना है, और अगर मान लो कि रिजल्ट नहीं आना होगा तो कॉन्सिक्वेंस है दैट वी हैव टू सफर एनी है ना। बट व्हाट वी कैन डू बेस्ट इज इन टर्म ऑफ डूइंग, वो हमें ध्यान देना है, ठीक है। अच्छा ये बताओ कि व्हाट आर द स्कोप ऑफ पब्लिक हेल्थ, एंड वेयर आर यू डूइंग टू गोइंग टू वर्क आफ्टर स्टडी। So with public health, I want to build my career as a health consultant, and I want to uh, uh, find the opportunities to intervene in the policies and how I can to and also to understand by the all the learnings I will have to understand the current public health challenges and how this process, the supply chain process works, and how uh, people are getting the service at the grassroots level. So I want to find out how I can shape the policy and how I can make implementation in this area. And
with this course, I also get the opportunities to work at the national and international level. So uh, I also want to con- like to do that. ओके ठीक है, चलो थोड़ा इस पे और एफर्ट करो, एक दो और बार में आई थिंक इट विल बी फाइन.